हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम टेस्ट प्रेप। माय नेम इज़ आशीष भार्गव। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मेरे को गले में थोड़ा दर्द था, जिसकी वजह से आपका जो यूट्यूब सेशन है दैट वाज समहाउ इंटरप्ट, बट अगेन आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। So, dear friend, this is very important to understand about the importance of the newspaper, because it tells you about that what things is very very important, what you should keep an eye on that, because newspaper जो है आपका मेजरली इसमें हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपसे बच्चे हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलो जी, तो दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। और व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस इन न्यूज़पेपर एनालिसिस, वी डिस्कस अबाउट द नेशनल न्यूज़, वी डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़, साइंस एंड टेक पर्सन न्यूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड एनी अमेंडमेंट्स, एनी बिल्स विच इज़ इन द पार्लियामेंट। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, सर जो न्यू पार्लियामेंट में जो अभी जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। बच्चे आज ही हम डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और इसके साथ साथ आपको पता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन टू व्हाट डिफरेंट थिंग। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेक श्योर दैट कि ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, विल आस्क यू द 5 क्वेश्चन दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस क्वेश्चन हम मेजरली क्या डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज़पेपर में आपका कंटेंट है उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्विक टिप्स में निमोनिक्स के थ्रू आज आपको 20 सेकेंड्स के अंदर आप ये सीखेंगे हाउ टू लर्न G7 कंट्रीज। दैट्स माई प्रॉमिस डियर फ्रेंड्स, विद इन 20 सेकेंड वी लर्न अबाउट द G20 कंट्रीज़ में, सॉरी यहाँ पे G7 कंट्रीज़ को कैसे लर्न करें। स्टे ट्यून टिल द लास्ट। Very first article here we talk about the minimum support price, loan waiver, crucial issues for farmers। थोड़े से ना बेसिक चीज़ों को समझते हैं। हमारे यहाँ कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट इज़ इन द प्राइमरी सेक्टर एंड देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर, राइट। So as far as primary sector is concerned, like agriculture is dominating in primary sector। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है मैन्युफैक्चर, वेयर वी आर टू मच लैगिंग बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न। एंड देन वी डिस्कस अबाउट टर्शियरी सेक्टर, जिसमें कि आपका आता है सर्विस सेक्टर, जिसमें कि मैं भी हूँ, एम्प्लॉयड हूँ। एजुकेशन कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। सो डियर फ्रेंड, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें मोर देन 75% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर एम्प्लॉयड, मतलब 1/3 पॉपुलेशन, 100 में से 75 लोग जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड। बट यहाँ पे एक चीज़ को समझो, अभी भी हमारे में ये डेटा 50% से ऊपर का है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से। जब आधी हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट द आउटकम इन द GDP of our country as far as the agriculture sector is concerned, that is less than 25%। so यहाँ पे आप एक चीज समझो, the Bharatiya Janata Party Democratic Alliance NDA faced huge setbacks in the Lok Sabha elections in the agrarian belts of the country। जो सरकार है, the government is a continuation of the first 2 Narendra Modi regime that favored the corporate houses and tweaked policies in agriculture, rising farmer suicide। Farmers expect that this government make a radical break from all earlier budget। Of course, this is asking for the tall order। So यहाँ पे अगर बात करें NCRB डेटा की, NCRB क्या है बच्चे, which is National Crime Record Bureau, National Crime Record Bureau। So National Crime Record Bureau के डेटा के हिसाब से 1,474 farmers and agricultural workers committed suicide between 2015 and 2022। This is tragic indications of the agriculture crisis in the country। So most important issues for farmers in the country today is statutory minimum support price, जिसका रेट क्या है, इसका फॉर्मूला इज C2 plus 50%, that is 1.5 times the comprehensive cost of production as recommended by MS स्वामीनाथन कमीशन। ये MS स्वामीनाथन, बिल्कुल सही सुना आपने, दिस ईयर ही गॉट भारत रत्न अवार्ड, और MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। सो ये जो C2 plus 50% का फॉर्मूला है।
So unless that is done, is going to be an impossible even the begin to resolve the agriculture crisis. They will have to make a budgetary provision to implement this, and this is first demand of the farmers. Cut input prices की बात करें, second point is about the cost of production which is continuously rising. Our expectations from the budget is they must cut down the cost of productions by reducing the price of fertilizers, seeds, insecticides, diesel, water and electricity. The rest of all these inputs are going up. और statutory MSP जो है the rate of C2 plus 50% may have no meaning अगर cost of production जो है उसको अगर brought down नहीं किया गया तो. So the government should bring control through the budget on the corporates who are producing inputs. और जो बजट अभी गवर्नमेंट पास करने वाली 22 ऑफ जुलाई को आफ्टर इलेक्शन, मतलब ऑब्वियस इलेक्शंस के बाद, इससे पहले इंटरिम बजट आया था. सो द बजट शुड हेल्प पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स. बात करें अगर लोन वेवर्स की, जो थर्ड एक्सपेक्टेशन है फार्मर्स की दैट फ्रॉम द बजट इज दैट दे गिव अ कंप्लीट वन टाइम लोन वेवर फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री. अनलेस दिस इज डन, farm suicides cannot be prevented. This government has written off loans worth about 16 lakh crore of corporates. Fourth point है like relevant of context in the climate change and the environmental situations in the light of continuous droughts होते हैं, floods होते हैं हमारे कंट्री में, अनसीजनल बारिश की वजह से रेन्स होती हैं, hailstorms. There should be comprehensive crop insurance scheme which is totally different from the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. बहुत सारे states में they opted out and some states are starting their own scheme. This is because प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है that is working in the interest of insurance company, not of farmers. और पांचवा पॉइंट ये है कि दैट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ इरिगेशंस एंड पावर, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशंस एंड पावर हैज़ कट डाउन इन लास्ट 10 years. बात करें एम नरेगा की, 6 पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एवर सिंस द मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर दे हैव बीन ट्राइंग टू स्ट्रैब MG नरेगा ऑफ फंड्स, और नंबर ऑफ वर्क डेज हैज़ कम टू जस्ट 42. 7th point ये है which is very important is the questions of land. Rulers have changed the slogan of land to the tillers to land to the corporates. मतलब ये कहना होता है जो हम जिस पे हम खेती करते हैं वो कॉर्पोरेट्स को जाता है. सो बात करें लैंड एक्विजिशन एक्ट की, द मासिव एक्विजिशन ऑफ फार्म लैंड बाय कॉर्पोरेट्स हाउसेज, लैंड एक्विजिशन मस्ट बी डन ओनली व्हेन स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर अ पब्लिक पर्पस. टू रेज रिसोर्सेज फॉर ऑल दिस द यूनियन गवर्नमेंट impose wealth tax and inheritance tax as well. These things you got to know. I hope this one is very clear for each and everyone. Let's move to the next article. Here we talk about the High Sea Treaty. जो अपना कंट्री है, प्यारा देश भारत, India will sign the ratify the High Sea Treaty. High Sea Treaty. So basically this the agreement which deals with the ocean outside a country's national jurisdiction that can help protect marine ecology and ensure equitable sharing of marine resources. So यहाँ पे हाई सी ट्रीटी को साइन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे a microwave at the bottom of the sea of the island of Greece. So only 14%, sorry 1.44% जो है of the high sea is demarcated as protected areas. Almost all of this is near Antarctica. Important to achieve 30 targets under Cunning Montreal Global Biodiversity according. और 75 से लेकर 199 million tons is estimated volume of plastics in the ocean. By 2050, there will be more plastic by weight to ocean this than fish according to a widely quoted study 2016. बात करते हैं यहाँ पे हाई सी ट्रीटी दैट सीक्स टू अचीव 3 सब्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव. पहला क्या है उसमें, जो हाई सी ट्रीटी है इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है माय फ्रेंड? 1 इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी. कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ marine ecology.
marine ecology. Second, fair and equitable sharing of benefits from marine genetic resources, and there to make environmental impact assessment EIA for any activity that can degrade the marine ecosystem, a mandatory practice. And this is the fourth objective, as well as that of capacity building of a transfer of marine technology to developing countries. This will help make full of the benefits of the oceans, and while the same time contributing towards its conservation. ये जो treaty है my friend, that deals only with the oceans that are outside the national jurisdiction of any country. और typically जो national jurisdiction extend up to 200 nautical miles, through almost 370 kilometer from the coastline, an area that is called a space exclusive economic zone. जो आपका 200 nautical miles का area होता है उसे exclusive economic zone यानी EE एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ECZ के नाम से भी बताते हैं. एंड एरियाज आउटसाइड ऑफ द ECZ एवरी कंट्री आर नोन एज हाई सी ऑफ इंटरनेशनल वाटर. और ये जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला एरिया है माय फ्रेंड किसी भी कंट्री का, इसे कहते हैं हाई सी ट्रीटी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. So they belong to no one and everyone enjoys equal rights for navigation, overflight, economic activities, scientific research of laying infrastructure like undersea cables. UNCLOS जो है, ocean are governed by several international laws, for most important and comprehensive which is UN Convention on the Law of Seas, UNCLOS, UNCLOS कहते हैं इसे. This is 1982 में agreement हुआ था that applies to entire ocean area and territorial well as the international waters, and lay down the legal framework for the governance on sea. और हाई सी ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम दैट इज sought to be achieved mainly through the demarcation of marine protected area MPA, and these would be the ocean equivalents of national parks or wildlife reserves, which were activities that would be regulated and conservation efforts taken up. Now बात करते हैं नेक्स्ट पे. What is the draft digital competition bill? मैंने आपको पहले बताया था कि हम बिल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे. क्लैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं. देखो, FAB 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूट कमिटी ऑन डिजिटल कॉम्पिटिटिव बिल्स. डिजिटल कॉम्पिटिटिव बिल के बारे में. So on FAB 2023, Ministry of Corporate Affairs constitute a committee on digital competition law that to examine the need for a separate law on competitive and digital markets. What is the ex-ante framework? ये द कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, दैट इज़ अ प्राइमरी लेजिस्लेशन कंसर्न फॉर प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एंड इट एस्टैब्लिश्ड द Competition Commission of India as the national competitor regulator. So as with competition law in all other jurisdictions, the Competition Act 2002 is based on all ex post framework. This means that the CCI can use its power of enforcement only after the anti-competitive conduct has occurred. So in case of digital markets की बात करें तो CDCL जो है आपका, which is Committee on Digital Competition Law, has advocated for an ex-ante competition regulation. This means that they want to Competition Commission of India enforcement power to supplement such that it allows it to preempt and prevent digital enterprises from indulging in anti-competitive conduct in the first place. चलो जी, what has been the response? रिस्पॉन्स ये है कि जब ड्राफ्ट बिल किया गया, फर्स्ट देयर इज अ कंसिडरेबल skepticism on the how well an ex-ante model of regulation will work, and this is compounded by concern of its potential negative effect of investment for startups in India, and they might be deterred to scale up and prevent meeting quantitative threshold. एंड स्टडीज़ ये भी बताती हैं जो रिस्ट्रिक्शंस है इनके लिए, बाकी उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट टू द MSME सेक्टर्स के ऊपर.
2024 Maoist suffers several setbacks in छत्तीसगढ़. ये जो आर्टिकल्स है जुलाई 1962 जुलाई में 9th को 162 Maoist deaths were reported in India और Maoist death in 2024 are the highest since 2009. और छत्तीसगढ़ बहुत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. न्यू क्रिमिनल लॉ इन फोर्स CRPC IPC एप्लीकेबल ओनली फॉर ओल्ड केसेस. इसमें है पहला भारतीय न्याय संहिता 358 सेक्शंस अगेंस्ट द 511 इन द इंडियन पीनल कोड एंड इट रिप्लेसेस. इसमें है जीरो FIR दैट अलाउइंग फिलिंग एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुडिक्शन. उसे कहते हैं जीरो FIR. उसके बाद अ पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विदाउट द नीड ऑफ विजिट अ पुलिस स्टेशन. एंड जजमेंट जो भी है क्रिमिनल केसेस के हैज टू बिकम विद इन 45 डेज. तो ये जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच रिप्लेसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज द थर्ड लॉ ऑफ विच विल कम इनटू फोर्स. भारतीय न्याय संहिता विच रिप्लेस इंडियन पीनल कोड 1860. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो 3 लॉ को इसमें चेंज किया गया और सेडिशन को वर्ड को हैज बीन रिप्लेस्ड with the succession or act against the country sovereignty, unity and integrity. तो पहला लॉ इसमें है भारतीय न्याय संहिता, जिसमें कि न्यू ऑफेंस में क्या है कि भाई अब आप ये नहीं कह सकते कि बेबी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, फिर एंड टाइम पे यू एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशन एंड लेटर ऑन यू डिनाइड टू गेट मैरिड. तो नाउ प्रॉमिस टू मैरी दैट क्रिमिनलाइजिंग डिसीटफुल प्रॉमिस टू मैरी. मॉब लिंचिंग को इसमें ऐड किया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म को ऐड किया गया, अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऐड किया. क्या क्या डिलीट किया गया? अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस. सेक्शन 377 और IPC विच क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी अमंग अदर अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी दैट रिपील्ड कंप्लीटली. एडल्ट्री, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री ओमिटेड इन कंसेंस ऑफ एपेक्स कोर्ट जजमेंट. ठग्स को, जेंडर न्यूट्रलिटी को हटा दिया गया. बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए फेक न्यूज़ के ऊपर, सेडिशन के ऊपर, मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस एंड डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. दूसरी जो बात है भारतीय साक्ष्य एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और में 170 सेक्शंस हैं दैट ऑल्टरिंग 24 एडिंग 2 और रिपीलिंग 6 ऑफ 167 सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें कि लीगल प्रोसीडिंग कैन ओनली बी प्रेजेंट एडमिसिबल एविडेंस. जिसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, ओरल एविडेंस दैट टू गिवन इलेक्ट्रॉनिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दैट आर कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी एविडेंस and electronically adjoint trials जो है that more than one person for the same crime के लिए. भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसमें हाई कलर कोर्ट्स, मैंडेट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये सारी चीज़ें. तो नाउ यू गॉट टू नो कि ये क्या चीज़ें थी. G7 के लिए मैंने पहले बताया 2014 तक रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ G7, उसके बाद रशिया अभी पार्ट नहीं है. और मैंने आपसे एज ए प्रॉमिस्ड कि G7 कंट्री को लर्न करने के लिए विल टेल यू द टेक्निक्स थ्रू विच दैट यू विल लर्न कि हाँ G7 कंट्रीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं. व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ रिसेंट ग्रुप ऑफ 7 मीट इन इटली? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया बीन इन्वाइटेड? और इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द आउटरीच ऑफ 11 टाइम्स. इंडिया जो अभी मेंबर है आउटरीच मेंबर है. What was the G7 summit hoping to achieve? Bridging difference between the West and the rest, finding new ways to find support for the Ukraine war, investing in Africa and grappling with the migration. How important the India for the G7 process? See, India has been an important part of G7 process of several years. Now coming to the grouping of attention 2000, India is not only a key member of the Global South and has hosted the Voice of Global South conferences 2023. And G7 is increasingly under the attack for being an elitist, non-exclusive group that does not include 3 of the world top economies. मैंने बताया था एज अ प्रॉमिस G7 कंट्री को लर्न करने के लिए, और जी हाँ, जूस विथ GF. अब यहाँ पे J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली. इटली ने ही होस्ट किया था. एंड C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड एंड G का मतलब जर्मनी, F फॉर फ्रांस. रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ G8. ऑब्वियस इसके हटने के बाद 2014 में इट वॉज कंसिडर एज अ G7 ग्रुप. इज दैट क्लियर?
Now questions of the day. Here's the very first question is here, the Men and Biodiversity Program is a MABB कहते हैं, MAB program, and is an initiative of which organization? United Nations Environmental Program, UNEP, Worldwide Fund for Nature, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, International Union for Conservation of Nature, IUCN. So यहाँ जो है राइट आंसर क्या है, दैट इज मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो है ये इसको किया स्टार्ट यूनेस्को ने. यूनेस्को recently added 11 new biosphere reserve worldwide spanning countries like Colombia, Italy, Mongolia and Republic of Korea. और मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो है दैट कॉमनली रेफर टू द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम दैट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को लॉन्च्ड इन 1971. Which of the following countries is not a member of G7? Obvious, the answer is here Russia. Russia out from the G7, G8 in the year of 2014 को ये अलग हो गया था. That is why we can say Italy ने इस साल होस्ट किया. Italy, Germany, Canada is a member. Russia is not a member. So A is the right answer. G7 is founded in 1975. Formerly called Library Group of 6, Group of 8, reversion in the intergovernmental organization up to 7, the world largest advanced economy, जिसमें कि आपका अभी जस्ट हमने लर्न किया इसकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. प्रोजेक्ट परी is an initiative of Ministry of Cooperation, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Culture. So Ministry of Culture is the right answer, D. So Ministry of Culture has initiated Project Pari, Public Art of India, that too coincide with the 46th World Heritage Committee meeting in New Delhi from 24th to 31st July 2024. Project Pari के बारे में बात करें, परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, और ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट एग्जीक्यूटेड बाय ललित कला अकादमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट with reference to Servants of India Society. Servants of India Society को establish किया था महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु that is गोपाल कृष्ण गोखले, और ये फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे ये नहीं है, तो ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन. सोसाइटी इज ओनली कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड अचीवमेंट्स. नो, इसका ओनली एक स्टेटमेंट सही है, और इसको 1905 में इस्टेब्लिश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने. जी हाँ, 1905 में स्टार्ट किया था इसे. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दैट वाज फॉर्म्ड इन पुणे, महाराष्ट्र, 1905 by Gopal Krishna Gokhale, and the society organized many campaigns that to promote education, sanitation, poverty, and alcoholism, discrimination, operation of women, and domestic abuse. Where is the headquarters of Indian Ocean Rim Association? तो इसका राइट आंसर क्या है? दैट इज द मॉरिशस. मॉरिशस इज द राइट आंसर. So dear friend, this is all about the session. One more thing that is very important to understand is that please share this beautiful session to your friends and family. Make sure if you are new in the channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. And one more thing that I should tell you is that newspaper is a very important source for the newspaper, right? PSS पे आपको articles of the day, daily snapshots वहाँ पे मिलती हैं, मंथली कंपेडियम है, जीके क्रॉनिकल है, वेयर यू कैन आप कंपाइल्ड फॉर्मेट में, बट ये डेली बेसिस पे आपका थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज को लेंगे, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आई होप दैट नाउ यू इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी किसी भी क्वेश्चंस की क्वेरी मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा. सो राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आप अपना ख्याल रखें एंड मेक श्योर कि आप छोटे थोड़े तो बहुत नोट्स भी बनाएं इसके, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम आप यूट्यूब तो वहाँ पे वॉच नहीं करेंगे एक ही चीज़ को, आप ना आपको याद रहेगी कि हमने किस डेट को ये चीज़ डिस्कस की. इज बेटर टू मेक ए A4 शीट, मेक अ वेरी शॉर्ट नोट्स दैट इज अराउंड 10 to 15 pointers that would be very easy to you that to recall or revision all the content. I hope that this one is very clear for each and everyone. So we'll meet you in the next session of daily news analysis. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें.